Hello students, today we will start our next tense, that is past tense. Past tense expresses past habit, routine, incident, state and condition etc. इसकी जो formation, example, Ram went to see a movie last night. Now I am explaining the formation of simple past tense. For the statement sentence, subject plus second form of the verb and plus object. Example I have given earlier to you. In interrogative sentence, we put did in the beginning. After that subject plus first form of the verb plus object. Did is the second form of do, so we have put here first form of the verb. डिड जो है यहाँ डू की फर्स्ट फॉर्म है, इसलिए हमने सेकेंड फॉर्म नहीं लगाई क्योंकि सेकेंड फॉर्म स्टार्टिंग में आ चुकी है. एट द एंड वी पुट क्वेश्चन मार्क. इन द नेगेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. इंटेरोगेटिव सेंटेंस एग्जाम्पल, डिड यू परचेज अ बुक येस्टरडे. नेगेटिव सेंटेंस एग्जाम्पल, दे डिड नॉट सी मी लास्ट इवनिंग. दैट इज योर सिंपल पास्ट टेंस. सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ हम बेटा पास्ट के किसी इवेंट को एक्सप्रेस करने के लिए, पास्ट के किसी एक्शन को बताने के लिए करते हैं. जैसे आप स्टोरी लिखते हैं, स्टोरी राइटिंग के अंदर, या कोई आप रिपोर्ट राइटिंग लिखते हैं, आप उसके लिए सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ करते हैं. इट इज़ ऑल्सो इंडिकेट एन एक्शन कंप्लीटेड इन द पास्ट. जो एक्शन हमारा पास्ट में कंप्लीट हो गया है उसको शो करने के लिए भी हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ करते हैं. कुछ एडवर्ब्स हैं इसके लिए जो हम यूज़ करते हैं इसमें. यस्टरडे, लास्ट नाइट, लास्ट इवनिंग, लास्ट मॉर्निंग, एगो, इन 2010 एट्सेट्रा. एंड एग्जाम्पल, शेक्सपियर रोट मैनी प्लेस. आफ्टर दैट योर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. पास्ट कंटिन्यूअस टेंस is used to denote an action going on for some time in the past. कि past में वो एक्शन कंटिन्यू था, प्रोग्रेस में था, कंप्लीट नहीं हुआ था बट इन प्रोग्रेस था. फॉर एग्जाम्पल, द बस वॉज मूविंग दैट टाइम. स्ट्रक्चर फॉर द स्टेटमेंट सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस वॉज प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म विद ing प्लस ऑब्जेक्ट. विद द सिंगुलर सब्जेक्ट and I, we use was. With the plural subjects, we, you, they, names, we use were. In the interrogative sentence, we put was were in the beginning and at the end we put question mark. The structure for the interrogative sentence will be was were plus subject plus first form of the verb with ing plus object. At the end we put question mark. Negative sentence structure, subject plus was were plus not plus first form of the verb with ing plus object. Examples are also given. Rama was not washing her clothes. Interrogative sentence example, were the boys playing football. Continuous tense is used with simple past tense. कभी कभी जो होता है ना simple past tense और past continuous tense इकट्ठे यूज़ होते हैं टू सेंटेंसेस के अंदर. लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सा एक्शन पहले फिनिश हो रहा है, कौन सा एक्शन बाद में फिनिश हो रहा है. यहाँ पर हम देखेंगे कि एग्जाम्पल के द्वारा आप समझिए, माई मदर वॉज स्वीपिंग द रूम व्हेन आई रीच्ड होम. यहाँ पर कौन सा एक्शन पहले हुआ है, रीच्ड होम. जहाँ हमारे पास सिंपल पास्ट टेंस और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस फिल करना हो, जो एक्शन पहले फिनिश होगा हम उसमें सिंपल पास्ट टेंस की फॉर्म फिल करेंगे, मीन्स वर्ब की सेकंड फॉर्म फिल करेंगे. जो एक्शन बाद में फिनिश हुआ है उसमें हम वॉज वर प्लस ing मीन्स पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को फिल करेंगे. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. आफ्टर दैट योर पास्ट परफेक्ट टेंस. पास्ट परफेक्ट टेंस indicates completion of an action. Indicates past tense completion of an action by some point of time in the past. कि पीछे past के किसी point of time पर वो काम खत्म हो चुका था, complete हो चुका था. The rain had stopped. Here
इट इंडिकेट्स दैट रेन हैड स्टॉप्ड, कि बारिश जो है वो आके जा चुकी थी. Structure for the statement sentence: subject plus had plus third form of the verb plus object. Negative sentence, we put not just after the had. So the structure for the negative sentence in the past perfect tense will be subject plus had plus not plus third form of the verb plus object. And the interrogative sentence, we put had in the beginning and at the end we put question mark. So the structure for the interrogative sentence in the past perfect tense will be had plus subject plus third form of the verb plus object. Examples are also here. Had he left for the office? That is the example for the interrogative sentence. The rain had not stopped. That is the example for negative sentence. Adverbs which are used in past perfect tense are already, by 2013, till, just. After that, past perfect continuous tense. This tense expresses progression of an action that started at some remote point in the past. कि कोई काम पास्ट में स्टार्ट हुआ था लेकिन अभी भी वो प्रोग्रेस में है. दे हैड बीन वॉचिंग द मूवी फॉर 30 मिनट्स. जो उन्होंने मूवी देखनी शुरू की थी फॉर द लास्ट 30 मिनट्स, बट they are continuing watching the movie at the time also. Formation for the statement sentence in the past perfect continuous tense is subject plus had plus been plus first form of the verb with ing plus object plus since or for plus time. I have already explained about the since or for in the present tense, but I am just explaining about it. Since, we use since for the point of time, means particular day, particular month, particular year, particular day part. For example, January, February, Monday, Tuesday, 26th of May, and 2020 morning, evening, 5 p.m, 10 a.m. हम इनके लिए since का यूज़ करते हैं. for the period of time, 20 minutes, 10 seconds, 1 hour, 1 month, 2 years, we use for. And the interrogative sentence, the structure will be had plus subject plus been plus first form of the verb with ing plus object plus since or for plus time, and at the end we put a question mark. In the negative sentence, we put not just after the had and in between had or been. Subject plus had plus not plus been plus verb first form with ing plus object plus since or for plus time. So the example for the interrogative sentence is had he been listening the radio since morning. Example for the negative sentence in the past perfect continuous tense will be the farmer had been watering the plants for 1 hour. This is the example for negative sentence in past perfect continuous tense. Uses, its uses. Past perfect continuous tense is used to denote an action that had been going on for some time before another action took place in the past. To talk about the continuity or duration of situation or activity means I had been working hard for 15 days. I had been working hard for the 15 days. Another example is when the Indian peace keeping force entered Sri Lanka, war against had been going on for some time. That's all for students today. This is your past tense. In the next lecture, we will start our future tense. Okay, you have to revise thoroughly the present tense and the past tense. After that, do practice of some exercise also if you have. Thank you so much, students.